Hello and welcome. This is lecture number 24. In this lecture, we will talk about non-contiguous allocation techniques. In the non-contiguous allocation technique, we will discuss on paging and then segmentation. So let's start. What is actually non-contiguous allocation? Why we need to allocate non-contiguous memory slots to a program? How process takes place using non-contiguous allocation techniques. So the concept of non-contiguous memory allocation model, it always envisages allocation of several non-contiguous area of memory to a program. None of these areas is large enough to hold the complete program. Hence, a part of the program, including its data and state, is loaded in each of these areas. A memory area which is not large enough to hold a complete program can still be used. This fact avoids external fragmentation and improves memory utilization. As a consequence, it is unnecessary to perform either merging of free memory area or compaction. Now this fact reduces overhead of the memory allocator, right? So according to the non-contiguous allocation techniques, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा मॉडल है जो इन्विसेस करता है किसी भी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एरिया को एलोकेट करने के लिए। मींस प्रोग्राम हो सकता है उसकी साइज़ कुछ भी हो, उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, क्योंकि प्रोग्राम की साइज़ डिपेंड करता है उसका कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा है, राइट? द साइज ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम में बी in data, stack and text. So data portion may take place, stack portion may take place, and text portion of the program or a process may also take place into the primary memory. So includingly we can say any program which consists of three data region, which is mostly known as TDS, text, data, stack, right? The size of the context may be vary to program or process to process, right? So it is not compulsory that we can store the whole program, the whole concept of a single program into a contiguous memory allocation. Maybe there are little holes available and maybe there are the large hole available, but it is not always preferable that we always find the large enough block and it will be always available for the process or a program, right? हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक बहुत बड़ा होल या लार्ज मेमोरी किसी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट स्टोर कर पाएगी, नहीं? दैट इज़ द कंडीशन। किसी भी प्रोग्राम को कम्प्लीटली मेमोरी में लोड करना और उस मेमोरी में लोड करने के लिए कितनी बड़ी मेमोरी चाहिए, उस कंप्लीट मेमोरी का अवेलेबल होना, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी टास्क कि वो उतनी प्राइमरी मेमोरी हमें अवेलेबल मिलेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक यदि हम किसी गेम को रन करना चाहते हैं, आई वांट टू प्ले अ गेम इन माय प्राइमरी मेमोरी इन माय कंप्यूटर एंड गेम रिक्वायर्ड 1 GB। एट द सेम टाइम प्राइमरी मेमोरी का 1 GB एलोकेट करना मेरे गेम को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, राइट? 1 GB मेमोरी लोकेशन या 1 GB मेमोरी मेरे प्रोग्राम को एलोकेट करना ये उस समय ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है 1 GB रैम खाली हो भी सकता है 1 GB रैम खाली ना हो, इट मे बी पॉसिबल। सो हमेशा कंटिग्यूअस स्लॉट्स अवेलेबल हो किसी भी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट को कम्प्लीटली लोड करने के लिए, ऐसा कंपलसरी नहीं हो सकता, राइट? यदि ऐसा होगा तो मेमोरी मैनेजर या मेमोरी एलोकेटर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है। सो नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन टेक्निक्स में हम ऐसे मॉडल को इन्विसेस करते हैं जहां पर हमेशा प्रोग्राम को जो मेमोरी एलोकेट होने वाली है वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। प्रोग्राम का कुछ पार्ट किसी अलग लोकेशन पर होगा, प्रोग्राम का कुछ अलग पार्ट किसी अलग लोकेशन पर होगा, अलग अलग पार्ट अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर एग्जीक्यूट होंगे एंड इन दैट वे आवर कंप्लीट प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट।
So none of these area is large enough to hold the complete program, right? We don't require to have a complete large memory to hold the complete program. We can have a limited segments, we can have a limited slots, can have the limited holes or free memory. We can store our limited part of a program to a limited hole, limited size of hole. In the same way, we can allocate the entire program to a little holes, right? That is the concept of non-contiguous memory allocation. So let me remind again, the non-contiguous memory allocation model envisages allocation of several non-contiguous areas of memory to a program. None of these area is large enough to hold the complete program. Hence, a part of program including its data and state is loaded in each of these areas. A memory area which is not large enough to hold a complete program can still be used. This fact avoids external fragmentation and improves memory utilization. As a consequence, it is unnecessary to perform either merging of free memory area or compaction. This fact reduces overhead of the memory allocator. Right? I hope you're getting my point. What I'm trying to say is, the non-contiguous memory allocation model envisages allocation of several non-contiguous area of memory to a program. नॉन-कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन एक ऐसे मॉडल को इन्विसेस करता है, इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम की मेमोरी को अलग अलग नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन करेंगे. राइट, एक ऐसी टेक्निक्स जिसमें कोई एक सिंगल प्रोग्राम अलग अलग प्राइमरी लोकेशन पर, अलग अलग पार्टीशंस पर, अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर होगा, लोड होगा. नन ऑफ दिस एरिया इज लार्ज इनफ टू होल्ड द कंप्लीट प्रोग्राम. प्राइमरी मेमोरी में कोई भी एक सिंगल एरिया ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने कंप्लीट प्रोग्राम को होल्ड कर पाए, स्टोर कर पाए. सो नन ऑफ दिस एरिया इज लार्ज इनफ टू होल्ड द कंप्लीट प्रोग्राम. हैंस a part of program including its data and state is loaded in each of these area. Right, so किसी भी प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट जिसके अंदर कुछ स्टेक और कुछ डेटा रीजन हो सकता है, उस प्रोग्राम का कुछ डेटा पार्ट हो सकता है, कुछ स्टेक पार्ट हो सकता है,
that will be loaded in these areas. A memory area which is not large enough to hold a complete program can still be used. अब यदि किसी मेमोरी एरिया पर या किसी मेमोरी लोकेशन जो लार्ज प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर पाती, उस एरिया को भी, उस लोकेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए. दिस फैक्ट अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आई होप यू रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वी फील, कि यदि 1 MB लोकेशन हमारे पास है, 500 KB की प्रोसेस आती है, तो अल्टीमेटली प्रोसेस बाहर निकलने के बाद 500 समथिंग KB मेमोरी हमारे पास वेस्ट होती है. उस मेमोरी लोकेशन को हम यूज़ नहीं कर पाते. बट यदि रिमेनिंग स्पेस को भी हम किसी दूसरे प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में लोड करें, या किसी भी प्रोग्राम के छोटे से पार्ट को जो 500 KB का है, यदि हम उस रिमेनिंग स्पेस में यूज़ करते हैं तो वो मेमोरी यूटिलाइज होगी. सो इस फैक्ट के कारण हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड कर सकते हैं और मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ले सकते हैं. एज अ कंसिक्वेंसेस इट इज़ अननेसेसरी टू परफॉर्म आइदर मर्जिंग ऑफ फ्री मेमोरी एरिया और कॉम्पैक्शन. तो यदि हम नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं आएगा इस कंडीशन में. और इसके कंसिक्वेंसेस ये मिलेंगे कि हमें ना ही कॉम्पैक्शन टेक्निक अप्लाई करना है किसी भी मेमोरी एरिया को एक साइड लाने में. राइट. सो जो काम हम कॉम्पैक्शन टेक्निक से करते थे वो नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन टेक्निक का रिजल्टेंट होता है. राइट. तो हमें कॉम्पैक्शन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट. क्योंकि हम किसी भी लोकेशन पर छोटे छोटे मेमोरी के होल्स जो है उन होल्स को हम यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पर हम उतनी कैपेसिटी का प्रोग्राम का पार्ट लोड कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी नीड नॉट टू यूज़ द कॉम्पैक्शन टेक्निक टू मेक सेपरेट ऑफ द फ्री होल्स इन वन साइड and to separate the whole process in one side. We did not. We don't required to do the compaction in that case, right? So that is the benefit of non-contiguous allocation technique. We need not to perform the compaction techniques, right? Now this fact reduces overhead of the memory allocator, right? और ये memory allocator में या memory manager के लिए काफ़ी कुछ हद तक overhead को कम भी करता है, क्योंकि हमें compaction apply नहीं करना है. And it is very time consuming process. I hope you remember, यदि आप एक बार भी फ्रेगमेंटेशन करते हैं या कॉम्पैक्शन करते हैं, it will take number of hours in your computer system, right? This is non-contiguous allocation, right? Now how we can achieve the non-contiguous allocation? So we have two different methods, we have two different techniques to achieve non-contiguous memory allocation. First is paging, second is segmentation. Let's have a look what is paging. So we will discuss first paging and their hardware implementation, then we will go on segmentation in the next lecture. So in paging, memory is divided into fixed size of block. Let's write it. In paging, memory is divided into fixed size blocks called page frames. Processes are divided into blocks called pages, which are same size as the page frame. Okay, now this has to be remembered. In paging memory, in paging system, in paging technique, memory is divided into fixed size of block. Each block which is in size is fixed, called page frame, right? Processes are divided into blocks called pages, right? We know that the program which is stored in the hard disk, it is a passive entity,
and at the time of execution the program becomes the process, and process is an active entity, right? Now process, at the time of execution we call program 2 as a process. So process may have their own context, and process the context of the process may takes some page frames, right? So we can divide, the processes are divided into blocks called pages, because we need to store the context of the process. So we have to allocate pages to a process, right? So process further divided into number of blocks. Each blocks may have their own context, text, data and state, and to store the text part we need a pages, to store the data part we need a pages, and we to store the stack part we need a pages, right? So in order to achieve the storing of the context we need a pages. That is why processes are divided into blocks called pages, which are same size as the page frame. So suppose memory divided into page frame, and the page frame size is suppose 200 KB, right? So processes which are divided into a blocks called pages, pages should be in size of 200K, right? So pages, the size of pages and the size of page frame always be equal. So we allocate page frame to a page, okay, right? In this case, to perform the paging we need to do address translation. We have different entity to perform the paging technique. Let's try to understand in the graphical representation how paging perform, right? In this diagram you can see here, this is paging hardware. We have a CPU, another entity we have page table, then we have a physical memory and the logical memory, right? Logical memory, that means we are talking about the hard disk. These are segment, these are byte offset number, 0 1 2 3, right? That is hard disk. And the zero indexing, you can say it is a page, page number 0, page number 1, page number 2, page number 3, right? Page number 0 have 4 different byte offset. In the location of byte offset, which is 0, there is variable stored in index A. In the location 1 there is another variable B. In the location of 2 there is another variable C, and the index of 3 there is another variable called D. So page number 0 contains 4 variables, and each variables may have different index, right? As you can see here, 0 1 2 3. So you can say it is a byte offset, right? This is page number and this is line number. You can say, take an example, page number 35, line number 22. Okay, you can consider it like that. So we have page number 0, page number 1, page number 2, page number 3, and that are stored into the logical memory in the hard disk. You can consider logical memory as a hard disk. So your pages are stored in a hard disk at situation at location 0 1 2 3, and each page may have 4 different byte offset, and each variable stored in that particular byte offset, A B C D E F G H I J K L M N O P, right? This is the structure of logical memory. Now let's take an example. This is physical memory. Physical memory, we must have a byte numbers 0 4 8 12 16 20 24 28. Each frame is containing 4 alphabets, that is why here is 4 word difference.
in each byte offset in each frame. Frame number first starting from 0 closing 4, 0 to 3. For from number 4 there is another frame started from the 4 closing to 7, another frame started from 8 closing to 11. So each frame containing 4 different alphabets, right? So we have the physical memory starting from the byte number 0 and closing from the 28 plus 4, you can consider like 32, 31, total 32 byte we are storing in the primary memory, right? Now every address, let's talk about a page table. It is very important entity. The page table is very important, which contain the index number and the base address, right? This page table is used to translate the address, because CPU always generate logical address, and that logical address is belonging to any logical page, right? So we need to find out the physical address, right? Before getting a physical address, we are not capable to store that logical page into a physical memory, राइट. सो बिना फिजिकल एड्रेस जनरेट किए हम किसी भी लॉजिकल पेज को हम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते. वी कांट डू दिस थिंग्स डायरेक्टली, राइट. दूसरी कंपल्सन ये भी है, सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली जनरेट अ फिजिकल एड्रेस, राइट, क्योंकि फिजिकल लोकेशन भी चेंज हो सकती है, क्योंकि कभी किसी प्रोग्राम का पार्ट किसी लोकेशन पर होगा, कभी किसी प्रोग्राम का पार्ट किसी लोकेशन पर होगा. हो सकता है पेज नंबर 0 बाइट ऑफसेट नंबर 4 में एग्जीक्यूट हो रहा हो. आफ्टर स्वेपिंग दैट विल रिमूव फ्रॉम द बाइट ऑफसेट नंबर 4, पेज नंबर 2 का कॉन्टेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आ जाए, फ्रेम नंबर 4 पर आ जाए. सो ऐसा कंपलसरी नहीं हो सकता. हम श्योर नहीं कह सकते कि बाइट ऑफसेट 4 से जो प्राइमरी मेमोरी में लोकेशन 4 है उस पर हमेशा किसी एक ही पार्ट को एग्जीक्यूट करना हो. सीपीयू कभी भी कोई भी पार्ट को किसी भी प्राइमरी लोकेशन पर स्वैप आउट कर सकता है, स्वैप इन कर सकता है और उस लोकेशन पर एग्जीक्यूशन कर सकता है, राइट. तो इस बात की श्योरिटी नहीं होने के कारण सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जो उसका हार्ड डिस्क का होगा, राइट. तो सीपीयू इज नॉट कैपेबल टू जनरेट अ फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली. सीपीयू ऑलवेज जनरेट द लॉजिकल एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड, फॉर अ पर्टिकुलर पेज. सो जिस भी पेज को उसे लोड करना हो उस पेज के लिए सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, या उसे किसी पेज के अंदर किसी वर्ड को जनरेट करना हो या उसको लोड करना हो तो उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए इट विल जनरेट अ लॉजिकल एड्रेस, राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कैसे सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है. उस लॉजिकल पेज के बेस पर और पेज टेबल के बेस पर एड्रेस का ट्रांसलेशन होता है, कैसे लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है और वो फिजिकल एड्रेस जनरेट होने के बाद किस तरह वो फिजिकल मेमोरी में स्पेस लेता है, ठीक है. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज पेज टेबल. एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अ पेज नंबर एंड द पेज ऑफसेट. जो भी एड्रेस सीपीयू के थ्रू जनरेट होगा उसका दो पार्ट होगा. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज पेज नंबर, जिस पेज के लिए जनरेट हो रहा है, इसमें से कोई भी पेज हो सकता है 0, 1, 2, 3. और पेज ऑफसेट, इस पेज के अंदर से उसे कौन सा अल्फ़ाबेट को लोड करना है, राइट. सो फॉर अ पर्टिकुलर पेज एंड इनसाइड अ पेज वी हैव 4 डिफरेंट ऑफसेट. सो फॉर अ पर्टिकुलर ऑफसेट, सो वी कैन जनरेट लॉजिकल पेज नंबर along with the byte offset, right. So suppose हमें यदि पेज नंबर 1 के अंदर अल्फ़ाबेट G को लोड करना है, that is our requirement to load alphabet G from the hard disk to a primary memory. So पेज जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो कैसा होगा, पेज नंबर 1 एंड ऑफसेट इज 6, या हम इसे 0 से कंसिडर करें 0, 1, 2. तो पेज नंबर 1 ऑफसेट नंबर 2, राइट. दैट इज द वे.
So every address generated by the CPU is divided into two parts. First is पेज नंबर, सेकंड इज पेज ऑफसेट. किस पेज नंबर से कौन सा अल्फ़ाबेट लोड करना है. द पेज नंबर इज यूज्ड एज इंडेक्स्ड इनटू द पेज टेबल. दिस इज पेज टेबल. पेज नंबर इज यूज्ड एज अ इंडेक्स. एज यू कैन सी हियर, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3. Right? Page table contain 4 different entry. This is the index. So page table contain two different entity and which is very important: index number and base address. Index number 0, page number 0 will stored in byte number, base address 20. This is the primary memory locations, the address of primary memory, right? So page number 1 store at 24 location. Page number 2 will stored in the location of 4, that is the base address. So पेज नंबर 2 के कंटेंट आपको प्राइमरी मेमोरी में 4 लोकेशन से मिलेंगे. पेज नंबर 1 के कंटेंट प्राइमरी मेमोरी में 24 लोकेशन से मिलेंगे, राइट? एज यू कैन सी हियर, लाइक पेज नंबर 0 will stored in page number frame number 20. This is our frame number 0, 4, 8, 12. This is frame number 20. So page number 0 starting from 20, this is starting from 20, A, B, C, D, and A, B, C, D is the content of page number 0. In the same way, page number 1 will load our content from the 24 location. This is 24 location, E, F, G, H. So page number 1, this is page number 1, E, F, G, H, that will be loaded in that way, right? So the page number is used as an index into the page table. Page table contains the base address. As you can see, page table contains the base address of the page table into the base address of each pages in the physical memory. So पेज टेबल दो एंट्री रखता है, एक इंडेक्स और एक बेस एड्रेस. इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा पेज है और बेस एड्रेस ये बताता है कि प्राइमरी मेमोरी में किस लोकेशन पर वो स्टोर होगा. This base address is combined with the page offset to define the physical memory address that is sent to the memory unit. The logical memory shown is simply for future reference, visual reference. Let us consider an example. Now look carefully how CPU generate the logical address. As you can see here, logical address is 01, राइट. जैसा मैंने आपको बताया जस्ट, लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है. सीपीयू हमेशा दो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है. वो लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में होगा. फर्स्ट पार्ट इज इंडेक्स, सेकंड इज बाइट ऑफसेट, पेज नंबर एंड बाइट ऑफसेट. पेज नंबर 1 का थर्ड इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट हमें लोड करना है. इस एड्रेस से आप समझ सकते हो हम किस अल्फ़ाबेट को लोड करने में इंटरेस्टेड है या सीपीयू किस अल्फ़ाबेट को लोड करने में इंटरेस्टेड है. सो पेज नंबर 1, दैट इज पेज नंबर 1. इंडेक्सिंग नंबर 2, दैट मीन्स 0, 1, 2, दैट इज अल्फ़ाबेट G. दिस इज रेड, right? So CPU interested to load the variable G which is stored in a hard disk and that will load into a primary memory. But how we can load it? That is the first step. We can generate the logical address. So logical page is 01, number 1, and byte offset is 02. Now translate this logical address to physical address. We required page table. In order to achieve a address translation, we required page table, right? How we required? You can see here, page number 01, this is indexing 1, and 24, this is the base address. So we can go in that location, that is 24, this is 24, and we can store in third position, that is E, F, G, that is the G. Let's have a look. 24,
right? The base address will go on in this location. This is physical address. Now physical address having two different entity, frame number and byte offset. Now as you go in the frame number 24, this is 24, and the byte offset is 02, that means 012 012. In that location we have to store the variable g. Now this physical memory base address is then combined with the logical address offset to produce the physical memory address needed to reference the letter g in physical memory. So इस तरह से CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है. लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक पेज नंबर और दूसरा बाइट ऑफसेट. पेज नंबर किस बेस एड्रेस पर लोड होगा उसकी डिटेल हमें पेज टेबल से मिलेगी. उस नंबर पे जाके हम उसका बेस एड्रेस उठाते हैं. बेस एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस के पहले पार्ट में रखते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल एड्रेस में. देन इट विल गो फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, और तब हमें पता चलता है कि हमारा अल्फ़ाबेट प्राइमरी मेमोरी में किस लोकेशन पर जाएगा और किस बाइट ऑफसेट पर जाएगा, राइट. सो दिस इज पेजिंग हार्डवेयर सिस्टम. I hope you getting my point. In the next lecture we will discuss on the segmentation and how it is implemented through the using hardware. We will discuss on that lecture. Thank you.